Okay, so in last class we discussed about question paper of 2017. So we are going to continue that paper. Okay, so we already discussed about, I think we discussed all these questions, right? What is the meaning of derived services? What do you understand by perishability? ये सारे questions हम लोगों ने कर लिए थे, है ना? Blueprint, Yes, service, define service mapping, we already did that. So let's start with the second point, that what is the importance and scope of services, right? What is the importance and scope of services हम करते हैं आज. First question is, what is the importance of service? So what is the various importance of the services? See, services benefits, it is activities. So मैंने आपके जो option था उसमें लिख दिया service not provide benefit. Service always provide benefit. So basically service is activities, benefits, and service is something which is attached with every product as well. मतलब electronic item वगैरह सब हम उसको add on भी कर सकते हैं. When we are talking about the importance, the first one is that it works like a key differentiator. Key differentiator, what does it mean? Like we can differentiate our company from the another company by using the service. Like what I said, that some electronic companies, they are giving 2 years warranty and some companies are giving 1 year's warranty. So you can differentiate your product obviously with the quality, but also with the service. So it works like a key differentiator. It works like a key differentiator. It works like a key differentiator. बहुत सारे ऐसे consumers होते हैं, they consider the service as an important element. मतलब बहुत ज्यादा उसको important element लेते हैं. जब हम किसी शॉप में, किसी रिटेल स्टोर में या किसी कंपनी कहीं भी एंटर होते हैं तो लाइक सर्विस मैटर्स, राइट? व्हाटएवर वी आर पेइंग, सर्विस मैटर्स. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डोमिनोज जाते हैं, पिज्जा हट जाते हैं या कहीं भी जाएंगे हम लोग, so there we are not going because of the pizza and because of the food, but we are there, we are going there for the experience and for the service. So like the product cannot be differentiated. Like maybe you will get the pizza in Domino's, you will get pizza in Pizza Hut as well. Lapinos, there are multiple companies. You will get pizza in every pizza store, right? Obviously. But how you can differentiate your store from the another pizza store? By providing the service. Like you can differentiate it by service. Clear हो गई बात? समझ में आया? So hence we can say that service is defined as the key differentiator, where with a excellent service, company can easily retain their customer and attract the new customer as well. Clear हो गया सबको? Okay, if you want to write in this. Key differentiator में लिखो, so many consumers consider service as an important element, to judge, in order to judge the product or a services. यानी सर्विसेज और प्रोडक्ट को जज करने के लिए कैसा सर्विस आप प्रोवाइड करो, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, दे आर बेसिकली जजिंग इट. देखते हैं, उस एलिमेंट को मानते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानते हैं. आगे लिखिए, since there is not much difference in the product, of the product, like Domino's and Pizza Hut, we can write that as well. So since there is not so much difference in product of two brands like Pizza Hut and Domino's, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो who can going to differentiate it? So obviously service. So in that case,
service create, आगे लिखिए, in that case service create, in that case service create an impact on the customer's mind, on the customer's mind, यानी कस्टमर के दिमाग में एक पॉजिटिवली इंपैक्ट डालेगा सर्विस। अगर दो प्रोडक्ट या दो कंपनी बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उसके ब्रांड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर हम बात कर रहे थे डोमिनोज पिज्जा हट की, दोनों की ब्रांड इक्विटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी ब्रांड का वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, दोनों सेम टाइप के प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, पिज्जा दे बोथ आर सेलिंग। So how we are going to differentiate? We are going to differentiate by using services, right? And service will, if your service is good, excellent service is there, definitely it is going to impact the customers in the positive way, okay? And you are able to distinguish your company from that particular brand. Next one, importance of relationship. Like service always promote the relationship marketing. The question was also arise that what is similar like service marketing? That is relationship marketing. Why? Because in the service marketing, the basically here people are dealing with each other. Like the company is there, the employees are there, but what for what they are? Basically, वो किसके लिए हैं? They are there for serving the customers. एक minute. Service is an intangible thing. Like obviously, like product, we don't have anything to show. But in the case, customer will be able to buy service based on the mutual trust, based on the confidence, because of the what is the मतलब seller के confidence को देखते हुए खरीद लेते हैं, mutual trust होता है, seller पे trust होता है, ठीक है। तो ये सारी वजह से we are purchasing the product, हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सर्विस को लेते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ या सर्विस को फिर डायरेक्टली। सो हियर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सो सर्विस इज बेटर फॉर मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद द customers, listening to them properly, delivering them what exactly they want. So हम कह सकते हैं relationship is considered as an important basically in a service sector, and it will also helpful for retaining the customers, loyal customer and attracting the new. तो ये था आपका importance of relationship, इसमें लिखिए, पॉइंट लिखिए, right? Since service is an intangible, since service is an intangible product, since service is an intangible product, customer will able to buy, customer will able to buy, customer will able to buy such services, such services, such services based on mutual trust, based on mutual trust, based on mutual trust and confidence of, and confidence of seller, and confidence of seller, confidence of seller या confidence in seller, confidence of नहीं, confidence in the seller, मतलब seller के लिए हमारा confidence है कि इनके यहाँ से कुछ खरीदेंगे गड़बड़ नहीं मिलेगा, इनके यहाँ से सर्विस लेंगे बेटर सर्विस मिलेगा, this kind of trust, this kind of confidence we have, ठीक है। और ये कब हुआ है? बिकॉज जब भी सर्विस कभी इनके यहाँ लेने में फेल नहीं हुआ होगा, मतलब नेवर सर्विस फेलियर का कंसेप्ट कभी आया ही नहीं होगा, इसीलिए हमने लॉन्ग टर्म तक उनसे सर्विस दिया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया सर्विस के सेलर के ऊपर, तब बेसिकली रिलेशनशिप की वजह से वी आर एक्वायरिंग द सर्विस अगेन एंड अगेन फ्रॉम द सेम सेलर। आगे लिखिए, हेंस इट इज इम्पोर्टेंट, हेंस इट इज इम्पोर्टेंट, हेंस इट इज इम्पोर्टेंट for the seller, hence it is important for the seller, hence it is important to the seller for maintain good relationship, for maintain good relationship, for maintain good relationship with the customers, with the customers, with the customers by listening to their, by listening to their, by listening to their need properly, to listening to their need properly,
and delivering exactly and delivering exactly and delivering exactly what they want, what they want, what they want. यानी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस सेक्टर के लिए. क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप की वजह से ही बेसिकली कहीं ना कहीं कस्टमर आपके रिटेन करेंगे, कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस आएगा सेलर के ऊपर. सो वी कैन से दैट देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इन द सर्विस सेक्टर. नेक्स्ट वन इज कस्टमर रिटेंशन. कस्टमर रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब रुक जाना, रोक लेना, रिटेन कर लेना. ठीक है. सो कस्टमर रिटेंशन. ओके, कस्टमर रिटेंशन. कस्टमर रिटेंशन का यहाँ मतलब क्या हुआ कि वी ऑल नोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इज देयर एंड इट्स वेरी हार्ड टू रिटेन द ओल्ड कस्टमर. मतलब अपने ओल्ड कस्टमर को रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज the customers are price sensitive. If they will get better service and low price, they will definitely move toward the next other sector या other company. So in that case we have to retain the old one. हमें अपने old customers को retain करने की कोशिश करना चाहिए because acquiring the new customer is the expensive task. यानी expensive ज्यादा है. तो इसके लिए what we have to do, we have to basically प्रोवाइड देम स्पेशल बेनिफिट्स हमें देना चाहिए जो कस्टमर लॉयल हैं, या फिर कस्टमर को प्रायोरिटी दे सकते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा सेल्स प्रमोशन, एडिशनल डिस्काउंट उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. और हमेशा कस्टमर से फीडबैक लेते रहना है कि लाइक दे आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस और नॉट. सो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली एबल टू रिटेन द कस्टमर्स. तो इसमें लिखिए इन द कस्टमर रिटेंशन में राइट, in today's highly competitive environment, in today's highly competitive environment, in today's highly competitive environment, it is very important, it is very important to retain old customer, to retain old customers than to attract new ones, than to attract new ones. यानी यहाँ तो ये वही चीज कह रहे हैं कि नए वालों को ज्यादा इजी है अट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली ओल्ड वाले को रिटेन करना, लेकिन एक्सपेंसिव आपके लिए न्यू वाला होगा ज्यादा. आगे लिखिए दिस इज बिकॉज देयर आर lot of sellers trying to catch from the same pool of buyers, what does it mean? कि बेसिकली हम नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, दे आर बेसिकली engaging या बहुत ज्यादा attracting the same buyers again and again, they are basically retaining the old one. क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं कस्टमर्स को by providing them the additional benefits, priority, ये सब चीजों को भी आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट इज मल्टीपल टच पॉइंट. यस तोशी मैम, पहला वाला पॉइंट इसमें जो था एक बार फिर से बता दीजिए ना. कस्टमर रिटेंशन. यस मैम. In today's highly competitive environment, it is very important to retain old customers than to attract new ones. This is because हो गया मैम. there are lot of sellers trying to catch from the same pool of buyers. यानी जो भी उनके buyers हैं, यानी उनके जो ग्राहक रहे हैं, उन्हीं को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मल्टीपल टच पॉइंट्स. सर्विस सेक्टर क्योंकि इंटैंजिबल है, सो लाइक कस्टमर्स जो ज्यादातर है वो कन्विंस होने की वजह से सर्विस को एक्वायर करते हैं.
यानी ज्यादातर जो कस्टमर्स हैं दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज एंड देन आफ्टर दैट दे आर टेकिंग सर्विसेज। इसको थोड़ा लिखो फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। लिखिए, सर्विस सेक्टर, राइट, सर्विस सेक्टर does not provide any tangible services to the customers, any tangible services to the customers. Thus customers have to depend on intangible services like talking to many people about the services बिफोर बाइंग द सेम। यानी जो भी चीज हमें खरीदना होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर क्या है, वहां पर आपको सर्विस इंटैंजिबल चीज प्रोवाइड होता है, तो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, सर्विस को लेने से पहले, सर्विस को लेने के बाद वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस एंड वी आर टॉकिंग टू पीपल और एम्प्लॉइज अबाउट दिस, राइट। ये कहीं ना कहीं ये जो यहां तक लिख लिया ना सबने, बिफोर बाइंग द सेम, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन डेवलप कर रहा है कस्टमर के माइंड में वेदर टू गो अहेड विद द परचेज और नॉट, मतलब हमें सर्विस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये जो मल्टीपल टच पॉइंट्स होता है, दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द कस्टमर्स and to trust them and make the purchase. Multiple touch point is something where the customer, if they have queries, right, so they are going to inquiry about it, they are going to ask about it, they are पहले कोई भी चीज लेने से पहले, even product भी खरीदने से पहले we have so many queries in our mind, है ना। so we are basically looking data from that so many sources, like कभी इंटरनेट से चेक करते हैं, कभी कहीं से चेक करते हैं। तो मल्टीपल टच पॉइंट का मतलब यही है कि जहां से कस्टमर को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो कहां से ये बात पूछेगा। तो सर्विस को लेने से पहले, सर्विस को लेने के बाद जितने भी मन में शंका है, टेंशन है, we are going to ask the employees about it, and employees जो है वो basically क्या काम करते हैं, they are going to motivate the customer to purchase the product, ठीक है। so multiple touch point is related at how the customer is going to make purchase, and for purchasing they first need to motivate it and they don't need to be in dilemma, they have to be very much clear about the purchase। एंड ये कब होगा पॉसिबल, जब वो मोटिवेटेड रहेगा। और मोटिवेशन के लिए यहाँ पर कौन रहेगा, एम्प्लॉइज रहेंगे जो उनको मोटिवेट करेंगे और उनको प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करेंगे कस्टमर्स की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सर्विसेज प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट की स्पेलिंग है PROLIFERATE, प्रो proliferate, ILIFERATE, सर्विसेज प्रोलिफरेट। सर्विस प्रोलिफरेट का मतलब यहाँ क्या है, क्योंकि जो सर्विसेज है दैट इज इंटैंजिबल, मार्केटर शुड हैव अ डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट उनके पास तरीके होने चाहिए, आइडियाज होने चाहिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली मार्केट कर पाए, यानी सेल कर पाए, और अपने आप को रेस्ट ऑफ द क्राउड यानी मार्केट में जो भीड़ है उससे अलग कर पाए। दे शुड इन्वेंट वेरियस वेज टू कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स, उनको कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, and they have to tell them about the benefits of the services to the customer in their languages. Like for example, if Vodafone ke customer care mein if we are talking, they are going to basically define you in Hindi, English, right, and some local languages are also there, so which is easily able to reflect on the need and values. So in short we can say, because सर्विस को मार्केट करना, उसको सेल करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको ब्रांड एलिमेंट उसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा सर्विसेज में, तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी हैव टू यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट या प्रमोट आवर सर्विसेज, ठीक है।
एंड वी हैव टू कम्युनिकेट अबाउट द बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज। हमेशा कस्टमर के बेनिफिट के बारे में, जैसे आपने देखा होगा कि आए दिन आपके पास मैसेजेस या कॉल आते रहते हैं अबाउट टेलिंग यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द डिफरेंट प्लान, जैसे जियो का ये है, एयरटेल का ये, ऐसा आता है ना। So this is what is related to the proliferate, that we have to distinguish our company, we have to tell the benefit to the customers, and we have to communicate with the customer in the regular way, and this is how we are able to brand or promote, we have to promote की बात करें, promote our brand। clear हो गई बात? Service proliferate, it means that we cannot, without speaking service is not working, in short याद रखना, बिना बोले सर्विस काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्विस जो है ट्रस्ट पे चल रहा है, जब तक कोई इसको समझाएगा नहीं चलेगा ही नहीं सर्विस, ठीक है। और इसके लिए वी हैव टू यूज द डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्ट्रैटेजी, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए कस्टमर के साथ। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन सर्विस प्रोलिफरेट। नेक्स्ट पॉइंट इज फीडबैक इम्प्रूव सर्विसेज। फीडबैक इम्प्रूव सर्विसेज, लाइक कॉन्टिन्यूअस वे में जब हमें कोई फीडबैक वगैरह मिलता रहता है, इट इज डिफिकल्ट टू मैच अप विद द मार्केटिंग कंसेप्ट एंड ऑल, बट द सर्विस सेक्टर जो है उसमें अगर हमें फीडबैक मिलता रहे कस्टमर से कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, रेटिंग दीजिए एंड ऑल, इन दिस केस अगर जेन्युइन सजेशन और टिप्स अगर मिलता है कस्टमर के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में द कंपनी इज इजिली, ऐसे सिचुएशन में बेसिकली we are able to basically improve our services. Next question, next point is technology impact. Technology impact. ठीक है, तो इंटरनेट इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, यानी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट इज वर्किंग अ लॉट। सो यहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपकी, तो जैसे कि आप एयर टिकट करवाना हो या फिर कोई सर्विस लेना हो, प्री बुकिंग करना हो, हर चीज के लिए वी आर इजिली एबल टू यूज द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, वी कैन से, ठीक है। सो हियर द टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट इज देयर। सो टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट, फीडबैक improves the services proliferate, फिर आपके मल्टीपल टच पॉइंट्स हो गए, कस्टमर रिटेंशन हो गया आपका, इंपॉर्टेंस या फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि की डिफरेंशिएटर, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस इंसेपरेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द स्कोप ऑफ सर्विसेज, लाइक सर्विसेज कहाँ तक यूजफुल है हमारे लिए। तो सबसे पहली बात, क्रिएट अवेयरनेस। द फर्स्ट स्कोप ऑफ सर्विस इज क्रिएट अवेयरनेस। क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। सो हाउ, देखो सर्विसेज इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सर्विस। लाइक सर्विसेज मार्केटिंग इज डीलिंग विद द इंटेंजिबल प्रोडक्ट, इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बिजनेसेस, यानी कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड हो रहे हैं, किसके द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा। कस्टमर विल गेट द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो हम कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स द फुल डिटेल्स टू कस्टमर एंड मोटिवेट देम टू अवेल द डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय बिजनेस। सो एनी हाउ द सर्विसेज इज लाइक प्रमोशन, प्रमोट करना प्रोडक्ट को, नॉलेज देना प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में नॉलेज देना, दीज ऑल आर आल्सो द पार्ट ऑफ सर्विस। सो सर्विसेज आपको अवेयर कराता है कि बिजनेस में कौन कौन से आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सर्विस है दैट इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस एज वेल अमॉन्ग द कंज्यूमर्स अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एज वेल एज अबाउट द डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, अबाउट द डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज। फुल इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है आपको? सर्विसेज। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड लिखिए, बूस्ट सेल्स एंड रेवेन्यू, बूस्ट सेल्स एंड इंक्रीज रेवेन्यू, बूस्ट सेल्स एंड इंक्रीज रेवेन्यू, boost sales and increase revenue. What does it mean? Roll number 43, batch 1, कैमरा ऑन करो। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज जो है, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज हेल्प टू बिजनेस टू अट्रैक्टिंग द मोर एंड मोर कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, डिस्टिंग्विश करते हैं हम सर्विस की वजह से अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को दूसरे कॉम्पिटिटर से। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी सेल्स इंक्रीज होगा, आपके पास ज्यादा प्रॉफिट आएगा।
सो मार्केटिंग जो है, सर्विसेज की जो मार्केटिंग हम करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को, डिस्टिंग्विश करते हैं हम अपने आप को दूसरे कंपनी से, बिजनेस से, प्रॉपरली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, कस्टमर को इंड्यूस करते हैं कि आप अवेलेबल जो सर्विस के ऑफर्स हैं उनको अवेल कीजिए, उनको लीजिए आप, ठीक है। वंस द कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा आपके सर्विस से, तो वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, वर्ड बोल सकते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी यानी कि एक दूसरे को रिकमेंड करेंगे वो बोल करके अबाउट द सर्विसेज that they experience in your company. So eventually that is going to increase the sales of services and it will helpful for the raising the revenue और आपकी cost में अंतर होता है, पता है ना, revenue is the additional amount which is we are getting over the cost, right? So here it is helpful, the service is helpful for boosting the sales. जब sales बढ़ेगा तो definitely आपका revenue बढ़ेगा। क्लियर होगी पॉइंट? ये सारे स्कोप बता रही हूँ, स्कोप ऑफ सर्विसेज, इंपॉर्टेंस हो गया स्कोप। थर्ड लिखिए, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलिए, raise standard of living, like nowadays the people are basically aware about the economic services like banking, insurance, they are know about the colleges, education, they are knowledgeable about the retail. Nowadays even the people are moving toward the retail, organized retail sectors. So we can say that जो मतलब कहीं ना कहीं it is helpful for increasing the living standard, because इसका भी एक normal term में समझना कि सर्विसेज सेक्टर्स आर बूस्टिंग, ठीक है, बूम वाले स्टेज में है, डे बाय डे नए नए सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में, आपकी सेल ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, डेफिनेटली यू आर एबल टू बेसिकली start purchasing the luxurious product and taking those services which you are not taking in a previous time, ठीक है, पहले नहीं लेते थे। So anyhow we can say the people are more aware about the economic services, people are using internet nowadays, so anyhow the people are more aware about the services so that they are purchasing or availing the services, और जब services ले रहे हैं तो they are basically increasing their living standard। आई बात समझ में? यानी कि nowadays the people standards are increased because of the service, it is helpful for providing the employment and employment raised in disposable income and they are basically demanding for the new services। जैसे tourism देख लो, बहुत ज्यादा ये टूरिज्म बढ़ गया, खैर कोविड की वजह से एवरीथिंग वाज हैम्पर्ड बट स्टिल टूरिज्म देख लो आप, एजुकेशन में देख लो, द पीपल आर बेसिकली रेफरिंग द प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, है ना, सो दैट इज हेल्पफुल फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, वही वाली सेम चीज जो मैंने आपको पहले वाले पॉइंट पे बता दिया कि सर्विसेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, नए नए सेक्टर्स जो है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हो चुका है, कहीं ना कहीं जो आपकी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा सर्विसेज में और खासकर मार्केटिंग एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा है, तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नए नए स्ट्रैटेजीज का, नए नए कंपनीज एंटर कर रहे हैं मार्केट में, नए नए कंपनीज ओपन हो रहे हैं, रिटेल सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली इंक्रीज होने की मतलब बढ़ रहा है, तो वही कहीं ना कहीं सर्विसेज हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज पॉइंट लिखिए, हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आपका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों का इनकम इंक्रीज हो रहा है, सेल प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, रेवेन्यू कंट्री का इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, है ना, सो इट इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। See, earlier the Indian people are dependent on the agriculture. If we are talking about the 1947 or before that, people are dependent on that. But after basically in 5-year plan, the government is trying to show concern toward the industrial sector as well. And little bit, if the आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर वो थोड़ा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर इससे इंक्रीज हो रहा है। So
सो हम कह सकते हैं कि सर्विस जो है एज अ सपोर्टिंग एक्टिविटी शुरू हुआ मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर के लिए, और वो सबसे ज्यादा भी आगे इंक्रीज हो चुका है। कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर इंडिया में एक पैराडिज्म शिफ्ट हुआ है। इसमें जो ग्रोथ है सर्विस सेक्टर का, वो कह सकते हैं कि 50 इयर्स में एक्सट्रीम ग्रोथ हुआ है इसका। कंट्रीब्यूशन अगर हम आज भी कहें जीडीपी में तो इसका 55-56% है। लेकिन अगर हम लोग कितना इसमें एम्प्लॉय की बात करेंगे ना, तो 25% लोग सिर्फ इसमें एम्प्लॉयड है। यानी स्टिल द मेजर पोर्शन ऑफ द पीपल आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नॉर्मली टर्म्स की, तो अभी फिलहाल इसमें देखते हैं, हाँ 60 अब अच्छा अभी इंक्रीज हो गया, 61.5% सर्विसेज पहुंच गया आपका। अब इसका क्या क्या रीजन है, तो बूस्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग विथ, वो रहने दो, वो पॉइंट जरूरी नहीं है। लिखो इसमें क्यों ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, सर्विस सेक्टर क्यों इंक्रीज हो गया है। आईटी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और बाकी तो मैंने पॉइंट्स लिखवाया था ना, डेंक वगैरह जितने भी पॉइंट्स थे, तो वही सारे पॉइंट्स लिख देना। उसके अलावा लिख देना कि आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है आपका। हेल्थ केयर एंड टूरिज्म हो गया, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बहुत सारे ओपन हो गए, जैसे मेदांता, मैक्स। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है दूसरे कंट्री से इंडिया में कंपनीज ओपन हो रही है, सब्सिडियरी कंपनी ओपन हो रही है, तो इसकी वजह से भी सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो गया है। नए नए सर्विस इमर्ज हो रहे हैं इंडिया में, जैसे होम डिलीवरी सिस्टम आ गया है। ठीक है, आपकी कंसल्टेंसी का ऑनलाइन सिस्टम आ गया, इंटरनेट के थ्रू, स्काइप के थ्रू वी कैन फेस टू फेस इंटरेक्ट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, हेल्थ केयर इंक्रीज हो गया है आपका। बोल सकते हैं हम कि स्पेस वगैरह का जो भी काम है, मतलब कि स्पेस पर जाना, सैटेलाइट्स हो गया, फिर आपके बोल सकते हैं रोबोट हो गए, फिर आपके रॉकेट्स, ये जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, बन रहा है आए दिन। ठीक है, उसके अलावा आपका लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है और सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्रीज हो गया, कुरियर डिलीवरी सिस्टम इंक्रीज हो गया है। ठीक है, उसके अलावा आपकी बाकी की सर्विस जैसे मीडिया हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, पबजी जो वीडियो गेम है, ये सारी चीजें का बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो चुका है। फिर आपका आईपीएल वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, लीगल प्रोसीजर वगैरह, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं है जिसकी वजह से आपका जो सर्विस सेक्टर है वो बूमिंग स्टेज पर है। अगर अभी हम 10 सर्विस सेक्टर की, टॉप सर्विस सेक्टर की बात करें, तो सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री है आपका, एचडीएफसी बैंक है आपका, आईसीआईसीआई बैंक है, टाटा कंसल्टेंसी है आपका, लार्सन एंड टर्बो है, एसबीआई है, एनटीपीसी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये सब क्या है, ये सारे आपके सबसे हाई सर्विस सेक्टर में इन सब का रैंक है डेवलपमेंट में। तो ये जितने भी रीजंस है, इसकी वजह से आपका सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें, तो लगभग 2022 तक सर्विस सेक्टर इंडिया में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि 2022 तक 400 मिलियन लोग जो हैं, कहीं ना कहीं 400 मिलियन लोगों के लिए जॉब क्रिएशन की बात चल रही है। उसके अलावा आपके नए नए सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं इंडिया में। बस इससे ज्यादा तो कुछ गिवन है भी नहीं, बस इतना काफी है। तो बस लिख सकते हैं वो कि फाइनेंशियल सर्विसेज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, people are making them more secure because their salary is increasing, investment is increasing. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई एंसिलरी और सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मीडिया एंटरटेनमेंट, हमारा बहुत सारे चैनल्स ओपन हो चुके हैं। फिर आपका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, नए नए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए हैं। ठीक है, नए नए सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रहे हैं। पहले कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज इंडिया में नहीं होता था, होता है। ठीक है, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा बूमिंग स्टेज पर है। ठीक है, और बीपीओ, ठीक है, बीपीओ क्या होता है, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ कॉल सेंटर्स बहुत ज्यादा हैं दूसरे कंट्रीज के, बिकॉज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन।
तो सर्विस सेक्टर हमारा इन सब रीजन से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा और भी मैंने बहुत सारे फैक्टर्स लिखवाए हैं, वो सारे भी आप मेंशन कर सकते हो इस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट